Couple of you are back. Sir, yes. Okay. टॉपिक अभी ये सब हमने जो डिस्कस किया उसका थोड़ा एप्लीकेशन है, व्हाइट बोर्ड पे ले लेता हूँ. हेडिंग ऑफ द टॉपिक इज दैट forces acting on an object on rough horizontal surface. Whenever the word rough is used, that means you have to understand कि उसको फ्रिक्शन लग रहा होगा, बराबर. So let us solve it. कौन कौन से फोर्स लगते हैं उसका लिस्ट बनाते हैं and then we will solve it. You understand it carefully. So consider a rough horizontal surface which is shown by the red horizontal line. बराबर. A block or an object of mass m is placed on it. ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसका मास m है, इसको इसके ऊपर रखा है, राइट. तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m हो गया. बराबर. जब भी आप देखो कि देयर इज अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज हैविंग अ मास, आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मास की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम वेट बोल सकते हैं. तो कहना से एक फोर्स लगेगा वेट दैट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. बराबर. सपोज मैं इसको यहाँ से एक अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ, दैट फोर्स इज ऑफ पुल टाइप, मैंने पुल करूँ छो, यू चेक इट. बराबर. F is the applied force. Now this object of mass m is placed on a horizontal surface so that there is a type of force which is acting, जो आपके लिए नया है, that surface will apply on the object. ऑब्जेक्ट को आपने सरफेस पे रखा तो उसका ऑब्जेक्ट की वजह से सरफेस पे जो फोर्स आया वो वेट हो गया. यानी सामने सरफेस भी ऑब्जेक्ट ऊपर की फोर्स लगा हुआ है ना, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो वो वेट के ऑपोजिट लगेगा. ऐसे फोर्स को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स. क्या बोलते हैं? सच फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स that acts opposite to the weight. In this case, अगर बीजा केस ऑफ गैर समझा इश्यू था, दिस इज अ रिएक्शन फोर्स. इसको मैं आर से डिनोट करता हूँ. बराबर. आपने फोर्स अप्लाइड किया है, स्टिल द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और सरफेस जो हमने कंसीडर किया है वो रफ सरफेस है, then which force will keep this object at rest? static friction. Static frictional force. Can I say that the static frictional force will act between the two surfaces in contact in the direction opposite to applied force? ये जो मैंने ग्रीन कलर का एरो दिखा है वहां पे लगेगा. गेटिंग माय पॉइंट? Sir, yes. सो अगर हम बात करें एक एक फोर्स की, तो F इज द अप्लाइड फोर्स. तो फोर्स आपने अप्लाई किया है, वेट, that is a force acting due to the mass of an object. That weight is W is equal to mg. You can say that it is in downward direction. बराबर. अपोजिट टू वेट, इसके सामने वेट जो सरफेस है वो ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स. इसको हम आर से डिनोट करते हैं. ये जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे सरफेस पे रखा है? Sir, इसने नॉर्मल फोर्स.
ए भाई शांति शांति। ये रिएक्शन फोर्स का आप डायरेक्शन देखो, तो अगर Upward. सरफेस के कंसीडरेशन में देखोगे तो અપવર્ડ એટલે એના પરપેન્ડિક્યુલર છે। 90 degree. હા, તો પછી એને બીજું નામ બી અપાય, and in this case as the object is on the horizontal surface એને normal force કહેવાય। Normal. શું કહેવાય? Normal and force. normal આ કેસમાં રિએક્શન અને નોર્મલ એક જ ડાયરેક્શનમાં આવું, એટલે બે એક જ થાય, because the object is in horizontal surface, reaction force भी vertical લાગ્યું, એ vertical લાગ્યું એટલે તેને normal કહેવાય। तो in this case r is equal to l। और दूसरा एक फोर्स लगा जिसने ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखा, जिसको हमने बोला एफएस, तो दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। these are the forces, this is a list of force which is acting on the object। I'm clear with this? मैम सॉरी सर। by sir राख। हाँ सर सॉरी सॉरी સર આજે આર આર છે તો આર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ mg થઈ જાય ને, કારણ કે ટોટલ લિનિયર મોમેન્ટમ વાળો કેસ છે ને, એટલે બ્લોક કન્ઝર્વેશન। અરે મોમેન્ટમ તો જ્યારે ઓબ્જેક્ટ મોશન માં હોય ત્યારે આવે। here the object is in motion or not? ના સર નથી। તો એમાં કઈ તું પાછું મોમેન્ટમ એટલે સર પૂછાય છે? એમ નહીં, મોશનમાં એવું નહીં, હું એવું કહું છું કે ઓબ્જેક્ટ જેટલો ફોર્સ નીચે લગાડશે એટલો જ ફોર્સ નીચેનું જે સરફેસ છે ઉપર લગાડશે, તો પછી w ઇક્વલ્સ ટુ mg। એને રિએક્શન કહેવાય, એટલે એનું નામ નોર્મલ આપ્યું, બસ ધેટ્સ ઇટ। બીજું કઈ એને આમાં મોમેન્ટમ ફોમેન્ટમ કશું ના ના સર, આવે। એટલે આર ની વેલ્યુ mg ના થઈ જાય, માઇનસ mg। એ આવશે લા, આગળ આવશે, તું ઉભો તો રહે, હા શાંતિ તો રાખ। હજી તો મેં લિસ્ટ બનાવ્યું છે, હજી મેં આગળ સોલ્વ થોડી કર્યું છે। હા સર। ઓકે, so all of you clear with this? Sir, yes. Yes, sir. Should I proceed further? Sir, yes. Okay. હવે આ ઓબ્જેક્ટ ને ઉડાવવાનું છે આપણે? Okay. નહીં નહીં, ઉડાવવાનું નથી। ये ऑब्जेक्ट को आगे मोशन करवाना नहीं है, દોડાવવાનું છે। तो દોડાવવાનું भी નથી। तो ऑब्जेक्ट को तो इक्विलिब्रियम में ऊपर रखना है। हाँ, क्या स्टेडी रखવાનું છે। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यहाँ पे मैं फोर्स वेक्टर ले रहा हूँ। क्यों सर फोर्स वेक्टर लिया? You carefully see the diagram and tell me the force is acting on the block are in which direction? खाली x पर છે, ખાલી y છે કે xy બેવ છે? બંને ઉપર છે। બરાબર, આ x एक्सिस થઈ ગયું, and this is y axis। you can see that there are the forces acting along मेरे को x axis कौन सा है? Force. Applied force. Force applied. The force acting along negative x axis? Gravitational Static force. force. Static force. static frictional Static force friction. acting along positive y axis? Dilation force. Reaction or normal? And force acting in a negative y axis? Weight. Gravity. Mass of an object. अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट स्टडी इन इक्विलिब्रियम तो सिग्मा एफ वेक्टर इज 0। हमने देखा एफ वेक्टर लेने का रीजन ये है क्योंकि जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे है, तो वी हैव टू टेक इंडिविजुअली। एफ वेक्टर में से पहले एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस देखोगे तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। यू टोल्ड मी द व्हिच आर द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। क्या फोर्स एक्ट पर लग गया? Applied एक अप्लाइड फोर्स and static frictional force. Normal so if these force two applied forces, force, static frictional force and a weight applied force. F must be equal to Fs। F का वैल्यू Fs से इक्वल होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मोशन नहीं करेगा क्योंकि जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स हुआ उतना ही नेगेटिव एक्सिस पे Fs हो जाएगा, तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस का 0 हो जाएगा। सर लेस देन इक्वल टू ना आवे सर? ना भाई ना ना ना, लेस देन फ्रिक्शनल हमारा कहीं नहीं, वो तुझे छे समझ। हाँ सर। अपने जो अप्लाइड फोर्स लगाया है डस्टर या फिर वो भी जो भी ब्लॉक है वो फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस हो गया है, मतलब एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है। क्लियर विद दिस? सर यस।
उसी तरीके से उसको y एक्सिस पे स्टेबल रखना है, इक्विलिब्रियम रखना है, तो सिग्मा एफ ऑफ वाई 0 होना चाहिए। तो आप बताओ कंडीशन क्या होगा इसका? Normal force is equals to टू ग्रेविटेशनल फोर्स, Normal force is दैट equal इज to weight. वेट का फॉर्मूला क्या है? mg। G. तो नॉर्मल इज mg, એટલે હોરિઝોન્ટલ સરફેસ ઉપર નોર્મલ mg સાથે બેલેન્સ થાય એને રિએક્શન ફોર્સ બી કહેવાય, બટ જનરલી વી આર ટેકિંગ ધીસ એઝ નોર્મલ. આર યુ ક્લિયર વિથ ધીસ? सर यस। Yes, sir. ओके, ये चीजें आपको, ये कंपोनेंट्स कैसे लेने का, बैलेंस कैसे करने का, ये चीजें आपको आगे बहुत काम लगेगी. सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली. So do one thing, you write it down this, then we'll understood this and some other points from the notes regarding this. સર આ લખવાનું છે? हाँ भाई. सर सर बोलो भाई. સર અગર આ સરફેસ થોડી વીક હોય તો જરા તોડી આ માસ અગર તોડીને નીચે જતું રહે તો આ જે નોર્મલ નો ફોર્સ હોય ઓછો કહેવાય વેટ કરતા કે આ તો પછી ઇક્વિલિબ્રિયમ માં ના રહે. ઇટ હેઝ મોશન sir. અલોંગ y એક્સિસ એટલે વેટ વધી ગયું. હા સર. સર નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો ને. સર એક જ મિનિટ આના પહેલાની સ્લાઇડ કરો ને.
Completed? Yes or no? Yes, sir. Please confirm. Sir, yes. Okay. Should I remove it? Yes, sir. सर एक मिनट लास्ट स्लाइड करो. Done, sir. Thank you. Okay. So there are the certain points that we have to understand from notes. समझ लेते हैं. ये पेज तो हो गया था हमारा. ये मैंने अभी आपको समझाया. Forces acting on an object. बराबर. Yes, there is one next. There is a definition that we have to read and understand. So will be a volunteer to help me out to read this. कौन read करेगा? Sir, may I? Yes. हाँ, sir. Sir, m is equals to બધું વાંચ્યું કે direct? ના ના, આપણે એ તો થઈ ગયું. આપણે ડાયરેક્ટ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન થી રીડ કરવાનું. हाँ, sir. Coefficient of friction. The ratio of frictional force and normal force is called coefficient of friction, denoted by mu કહેવાય એને. mu. This symbol is mu. called mu. Yes, further next point. If object is in motion, then kinetic or sliding frictional force is considered. Mu is a parameter Yeah. to determine the roughness, smoothness of surface. Yes, this is an IMP concept. This is an IMP quantity that you need to understand. When we understand the coefficient of friction, is an IMP parameter for any surface. The coefficient of friction, which is denoted by mu, इसका symbol mu होता है. And by definition, it is a ratio of frictional force. That is F. The normal. That is N. बराबर. So mu is F by N, frictional force by N. तो आप समझ सकते हो कि इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा बिकॉज इट इज फोर्स टू फोर्स रेशियो. ऊपर भी फ्रिक्शनल એટલે फोर्स છે, नीचे भी नॉर्मल એટલે फोर्स છે. Now you know that there are the three type of frictional force. According to that there will be a three type of coefficient of friction. एक जिसको हम μs बोलेंगे, तब हो जाएगा वो fs by n. Almost it is fs max by n. fs જ્યારે भी આવે ને fs max by n. fs max by n. This is called coefficient of static friction, which is the ratio of maximum or limiting frictional force to the normal. बराबर. The second will be same. The definition remains same. It is friction by normal, but now it is mu k. So you have to understand that it is fk by n. ये क्या हो जाएगा? Coefficient of kinetic friction. this will be mu is coefficient of kinetic friction या dynamic friction या sliding friction जो भी होगी. And the third one will be type of third frictional force upon normal. So it will be mu r. That is fr by r. So that is a ruling coefficient of ruling friction. You getting my point? Sir, yes. Now you can see that from the definition, by
जो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज अ रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का रेशियो है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, बराबर। So that's why in the last point it is written that it is a parameter. It's a parameter which determines the roughness or smoothness of the surface. As an example, अगर मैं कोई केसेस में ऐसा बोलता हूँ कि म्यू का वैल्यू 3 है, so larger the value of mu, larger will be the friction and more rough will be the surface. Surface का roughness ज्यादा होगा। कोई केस में मैं ऐसा बोलता हूँ कि म्यू का वैल्यू कम है, छोटा है, तो lesser the value of mu, as mu is directly proportional to frictional force, तो उतना फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शनल कम होगा मतलब आपको समझ जाने का कि वो स्मूथ सरफेस होगा। You agree with me? સર સર એટલે म्यू ની વેલ્યू તમને આપી હોય तो म्यू के वैल्यू में से आप सरफेस कितना रफ है या कितना स्मूथ है ये डिटरमाइन कर सकते हैं। यस સર बोलो। એટલે મ્યુ નેગેટિવ કે 0 ના હોય ને? ना नेगेटिव तो ना हो, जीरो ना हो, जीरो हो तो Frictionless. परफेक्ट स्मूथ सरफेस। हाँ હા सर। okay, now we have understood the relative comparison between the forces। एफएस मैक्सिमम का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, उससे छोटा एफ के और सबसे छोटा एफ आर। तो वो कंपैरिजन वाइज अगर आप म्यू एस म्यू के और म्यू आर का भी कंपैरिजन करोगे तो एफएस मैक्स से म्यू एस मिलता है, तो वो सबसे ज्यादा, म्यू के उससे थोड़ा सा छोटा, तो म्यू के म्यू आर तो बहुत छोटा हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम, coefficient of kinetic friction is छोटा, and the coefficient of rolling friction is the least of all three. Yes સર बोलो भाई। સર નોર્મલની જગ્યાએ આપણે વેટ બી લખી દીધું ચાલે? ना लगा, in each case normal will not be equal to weight, इसलिए मैंने वो जब समझाया था तब नॉर्मल और वेट बैलेंस होता था, but for the object on a horizontal surface। तो આગળ જ્યારે પાછું inclined surface આવશે ને તો પાછું નોર્મલ બીજા કોઈ સાથે બેલેન્સ થશે। so you have to write down the normal, you cannot write down the weight। સર પણ Okay, નોર્મલ છે ને દર વખતે સરફેસ થી પરપેન્ડિક્યુલર જ હશે ને? हाँ पण mg हर वखते नॉर्मल ने बैलेंस થાય એવું જરૂરી નથી। there will be a cases in which the normal will not balance by mg। હા સર। चलो any other doubt regarding this? સર બોલો ભાઈ। સર એટલે આ મ્યુની વેલ્યુ ઘટશે તો નોર્મલની વેલ્યુ વધશે એવું ને? એવું ના કહેવાય ભાઈ, આપણે નોર્મલ કઈ म्यू પર થોડી ડિપેન્ડ કરે। પણ સર ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનેટ છે ને? हाँ तो એવું थोड़ी કહેવાય कि म्यू ની વેલ્યू घटશે तो नॉर्मल ની વેલ્यू વધશે। हाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर नॉर्मल घटेगा, नॉर्मल का वैल्यू कम होगा तो म्यू ज्यादा होगा, बट ऐसा कोई रिलेशन सरफेस के साथ नहीं होता है। હા સર। आपको ऐसा समझना है कि फ्रिक्शनल फोर्स और म्यू एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो म्यू का जितना वैल्यू ज्यादा होगा उससे आपको ये पता चल जाएगा कि सरफेस रफ है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा। म्यू का वैल्यू जितना कम होगा उससे ऐसा पता चलेगा कि फ्रिक्शन कम है तो सरफेस स्मूथ होगा। डू यू एग्री विथ मी? અને સર અગર ફોર એક્ઝામ્પલ અપ્લાઇડ ફોર્સ જે પોઝિટિવ એક્સ ડાયરેક્શનમાં છે અને આ નેગેટિવ એક્સ ડાયરેક્શનમાં તો મ્યુની વેલ્યુ નેગેટિવ આવી જશે ને પછી? ना वे भाई, म्यू का वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जाता है। તો પછી સર આ જે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ જે પણ હોય 3 ટાઈપના તો બધા પોઝિટિવમાં જ લેવા પડે ને એમ? એવું થોડી હોય, ફ્રિક્શન ને પોઝિટિવ માં જ લેવા પડે। તું ડાયરેક્શન કઈ એમાં પાછી વચ્ચે ઘુસાય? તો નોર્મલ બી ડાઉનવર્ડ છે કે અપવર્ડ છે તો એને પોઝિટિવ નેગેટિવ નહીં લેવાનું। we are just considering its magnitude। નોર્મલ ની म्यू ની વેલ્યુ નેગેટિવ ના આવે, that's it। હા સર। it's a positive constant which determines the value of roughness or the smoothness of the surface। are you all clear with this? Yes, sir. okay, should I proceed સર further? યસ। ये मेरे को Sir, yes. कंफर्मेशन तो बहुत कम स्टूडेंट्स देते हैं, बाकी सब Sir, क्या कर yes. रहे हैं भाई? Yes, સર sir. યસ। સર હા યસ સર। સર અને રિપ્લાય भी નથી આપતા બાકીના સ્ટુડન્ટ્સ। તો
सर हम यस ऐसा नहीं बोलते हर एक को अनम्यूट होकर सर रिप्लाई यस करना है. यू कैन रिप्लाई इन अ चैट बॉक्स. चैट बॉक्स तो यूज Yes, करता sir. आवड़े ना बधाने. सर यस सर यस. हाँ भाई. ऐसा कैसा आप लोग चैट बॉक्स में भी रिप्लाई नहीं कर सकते? 10-12 स्टूडेंट है वो रिप्लाई करते हैं, बाकी सब कहाँ पे होते हैं? सर पढ़ाते होते हैं तब भी ऐसा होता है. यू नॉट रिप्लाइंग एट सर ऑल. यस मीन्स व्हाट? मैंने बोला यस अनम्यूट सर. होकर रिप्लाई करना जरूरी नहीं है. यू हैव टू रिप्लाई मी इन चैट यस बॉक्स. सर. सर क्लियर. ओके. ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. ये हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी लिया, उसके टाइप सीखे, और ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है वो हमने देखा. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर. Yes, देखो, here it is given that mu is f by n. So mu s is fs max by n, mu k is fk by n, mu r is fr by n. As fs maximum is most maximum, उससे छोटा fk, उससे छोटा fr, बहुत छोटा fr, तो mu s is maximum, उससे छोटा mu k और सबसे छोटा mu r. चलो, here are some important points that you have to understand that can be asked to you in 1 mark objective. So let us understand it one by one. 5 points are there on this page. I want 5 volunteers who can read this. Will be that 5 volunteer. 1 6 चलो, बाकी ना 4. Yes, 2 3. Still 2. Yes, 4. Now 5th one. चलो फास्ट. यस, થઈ ગયા 5. तनिषा, कशिश, अंश, नंदन and ओम. Start with Tanisha. Yes, sir. When there is no applied force where F is equals to 0, then there is no static force. Fs is equals to 0. हाँ, तो ये तो मैंने भी पहले भी आपको समझाया था कि जब तक आप अप्लाइड फोर्स नहीं लगाओगे तब तक फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा. As in when you apply, start applying force, frictional force, static frictional force अपना वैल्यू इंक्रीज करेगा. पहले तो वो 0 ही होगा जब आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है. यस, नेक्स्ट. Yes, sir. As the applied force F increases, static frictional force Fs also increases, remaining equal and opposite and keeping the body at rest up to a certain limit. ये आपको ओरिजिनली देखने जाओ ना तो वो जो ग्राफ है ना वो समझा रहा है. देखो कि भाई आपने यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिया था, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लिया था. फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जब अप्लाइड फोर्स 0 था तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 था. फिर आपने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया तो एफएस भी इंक्रीज होता गया, remaining opposite to the applied force and keeping object at rest up to a certain limit fs max. Basically तो ये है. Yes, next thought. Yes, sir. Static friction opposes impending motion. The term impending motion means motion that would take place but does not actually take place. Under the applied force, if friction were absent. हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज द न्यू वर्ड कम इम्पेंडिंग मोशन. बराबर. चलो, इसमें ऐसा दिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका काम क्या होता है? इट अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन. अभी इम्पेंडिंग मोशन के लिए आपको क्या जानकारी दिया है कि द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मींस मोशन दैट वुड टेक प्लेस, कि वो हो सकता था लेकिन फ्रिक्शन ने उसको रोक के रखा इसलिए नहीं हुआ. आपने अप्लाइड फोर्स भी लगाया, मोशन हो सकता था लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ने उसको नहीं होने दिया. ऐसे मोशन को इम्पेंडिंग मोशन बोलते हैं. कैसे सर? एग्जांपल दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. सपोज आपके पास एक डस्टर है या एक बॉक्स है, इसको आप इंक्लाइन प्लेन पे रखते हो. इंक्लाइन प्लेन दैट मींस द प्लेन व्हिच इज इंक्लाइन एट सम एंगल थीटा. तो उसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए?
ઇન્ક્લાઇન પ્લેન તમે થીટા એંગલ પર રાખ્યું છે તો वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? डाउनवर्ड टुवर्ड्स ग्राउंड। डाउनवर्ड होना चाहिए, बराबर, ऊपर से नीचे होना चाहिए, लेकिन वो मोशन हो नहीं पाया, किसकी वजह से? फ्रिक्शन, स्टैटिक कौन से फ्रिक्शन ने ये होने नहीं दिया ये स्टैटिक मोशन को? फ्रिक्शन। हाँ, तो ऐसे मोशन को जो हो सकता था लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन ने उसको होने नहीं दिया, ऐसे मोशन को इम्पेंडिंग मोशन बोलते हैं। द मोशन दैट वुड अकर ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स बिकॉज बट स्टैटिक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस टू डू, होने नहीं देता है, ऐसे मोशन को इम्पेंडिंग मोशन बोलते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? तो आपको Sir. ये 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, डिफाइन इम्पेंडिंग मोशन, तो यहाँ पे डेफिनेशन है, and blank force opposes the impending motion, then your answer is static friction. સર બોલો ભાઈ। સર કોઈ ઓબ્જેક્ટ ને મૂવ કરવા માટે 5 ન્યૂટન નો ફોર્સ જોવે છે, 3 ન્યૂટન નો આપણે લગાવ્યો ફોર્સ, તો એ આમાં 2 ન્યૂટન કહેવાય ઇમ્પેન્ડિંગ ફોર્સ કે પછી 3 ન્યૂટન કહેવાય? હેલો સર। સર હેલો। हाँ भाई, ऐसा नहीं बोलते, આપણે ઇમ્પેન્ડિંગ મોશન ની વાત કરીએ છીએ, આપણે ફોર્સ નું કમ્પેરિઝન નથી કરતા। we are हाँ, talking about a impending motion but we are not talking about forces। તે તો ફોર્સ ને કમ્પેર કરી દીધા કે 5 ન્યૂટન નું જોઈતું હતું, 3 ન્યૂટન નું લગાવ્યું તો 2 ન્યૂટન નું ઇમ્પેન્ડિંગ ફોર્સ નથી, ઇટ ઇઝ ઇમ્પેન્ડિંગ મોશન। as simple sir. as that। તમારા ઘરે એક ટેબલ ની સરફેસ છે જે હોરિઝોન્ટલ રાખી છે, બરાબર? Yes, sir. હવે હું એને થોડું ટિલ્ટ કરતો જાઉં, એટલે એને ઇન્ક્લાઇન કરતો જાઉં એંગલ ઉપર, તો એના ઉપર Yes, જે sir. ઓબ્જેક્ટ રાખ્યું હોય એનું મોશન કઈ ડાયરેક્શન માં થવું જોઈએ? ડાઉનવર્ડ, डाउनवर्ड થવું જોઈએ, પણ ના થયું, રીઝન શું? ड्यू टू स्टैटिक फोर्स। अरे तो स्टैटिक ये जो फ्रिक्शन। मोशन होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, ऐसे मोशन को क्या, कौन सा मोशन बोलते हैं? इम्पेंडिंग मोशन। और उसको जो अपोज करता है उसको कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं? स्टैटिक। यस, आर यू क्लियर विद दिस नाउ? जिसने रिपीट करने को बोला था उसको भी पता चल गया? सर यस। सर बोलो भाई। સર આ ઇમ્પેન્ડિંગ મોશન તમે પેલો હમણાં એક કીધું ને કે ડાઉનવર્ડ જાય, સર એ સમજના પહેલા 3 વાર સમજાયું। આપણી પાસે એક હોરિઝોન્ટલ સરફેસ છે, એના ઉપર મેં એક બોક્સ રાખ્યું છે, તો એનું મોશન થવાનું નથી બીકોઝ યુ હેવ નોટ એપ્લાઇડ ફોર્સ, યસ બરાબર? હવે હું એને થોડું ટિલ્ટ કરતો જાઉં, એને ઇન્ક્લાઇન કરતો જાઉં, તો એનું મોશન ઉપરથી નીચે થવું જોઈએ કારણ કે સ્લોપ નીચે જાય છે। હા તો એ મોશન ને ઇમ્પેન્ડિંગ મોશન કહેવાય, જે ખરેખર થવું જોઈએ, यस बट इट कैन नॉट बी डन, नहीं हो पाया, किसकी वजह से? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या होता है? इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करने का। नाउ यू आर गेटिंग विद दिस? यस सर यस સર बोल भाई। સર એટલે ઓબ્જેક્ટ જ્યારે ઇન્ક્લાઇન્ડ મતલબ ઇન્ક્લાઇન પ્લેનમાં મોશન કરતું હોય તો એને ઇમ્પેન્ડિંગ મોશન કહેવાય, એવું ને? अरे भाई, इंक्लाइन એનું એક્ઝામ્પલ છે, that can be a certain impending motion, એવું નથી જરૂરી કે impending motion એટલે incline પર હોય ત્યારે જ motion। હા સર। બરાબર? yes, then proceeding further with the next point। किसका टर्न है भाई? चलो सर मैं यस, वांची लऊं? हाँ वांची लो भाई। Limiting friction, that is maximum value of static friction, does not depend on the area of contact. Limiting friction depends on normal force. हाँ, this is called a law of static friction। તમારે બાજુમાં લખવું તો લખી બી દેવાનું, નોટ્સ લખો ત્યારે બી યાદ રાખવાનું, because in some cases they will ask write the law of static friction। तो law of static friction ऐसा बोलता है, फर्स्ट चीज कि भाई जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको हम एफएस मैक्सिमम बोलते हैं, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया? एक डस्टर है रेक्टेंगुलर,
उसको आप कोई भी सरफेस पे हॉरिजॉन्टल रखो या उसको वर्टिकल रखो, हॉरिजॉन्टल રાખો એટલે એરિયા ઓફ કોન્ટેક્ટ વધારે હોય, એગ્રી વિથ મી? યસ સર. અને એને વર્ટિકલ રાખો તો એરિયા ઓફ કોન્ટેક્ટ ઓછું થઈ જાય. હા સર. હા સર. પણ બે કેસમાં ડસ્ટર તો એક જ રહ્યું એટલે એનું માસ તો એક જ રહ્યું. હા સર યસ. So in that case that the frictional force does not depend on this area of contact. उसको horizontal रखो या vertical रखो, frictional force तो सेम ही लगेगा, ऐसा बता रहे हैं ये फर्स्ट में. पढ़े છે ખબર? સર બોલો. સર તમે હમણાં કીધું ને ફોર્થ પોઈન્ટ લો છે શેનો હતો? This is called a law of static friction. ઓકે સર. सबको पता चला ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे नहीं डिपेंड करता ये वाला पॉइंट. સર આ એરિયા ઓફ કોન્ટેક્ટ વાળું પાછું સમજાવો. ये डस्टर है रेक्टेंगुलर, इसको आप हॉरिजॉन्टल रखो एक सरफेस पे या वही डस्टर को आप वर्टिकल रखो. हॉरिजॉन्टल रखोगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा आएगा, वर्टिकल रखोगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा. but in both case frictional force remains same क्योंकि डस्टर तो वही रहा तो मास भी वही रहेगा. યસ સર. That's what they want to explain. સર બોલ ભાઈ. સર પેલું મ્યુ ઇક્વલ્સ ટુ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ અપોન નોર્મલ હતું ને તો મ્યુ આવ્યું, નોર્મલ હજી આવ્યું, મ્યુ આવ્યું કઈ હજી? ના સર હું એવું કહું છું કે મ્યુ હજી આવ્યું. તું અત્યારે જે સમજાવું છું એ સમજ ને, મ્યુ ને કઈ અત્યારે વચ્ચે લે છે. અત્યારે મેં એવું समझाऊं कि एफएस जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, उसमें म्यू नहीं आया, मैं म्यू वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो पहले वो जो मैंने समझाया वो तो समझ गए. हाँ सर हाँ. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इसी में बता रहे हैं कि तो ये एफएस मैक्सिमम डिपेंड किस पे करता है. तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ. हमारी पास एक लाकड़ाનું ડસ્ટર છે અને એક મેટલનું ડસ્ટર છે, बराबर? एक लकड़े का डस्टर है, एक मेटल का डस्टर है, दोनों को एक ही सरफेस पे रखा है, दोनों का एरिया भी सेम है, या अलग अलग हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता है. तो इन विच केस द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ग्रेटर? કોના ઉપર વધારે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ લાગે? મેટલ. કેમ Metal. મેટલ ઉપર વધારે લાગે? રીઝન માસ શું? વધારે છે માસ ને. વધારે છે. માસ વધારે છે. માસના લીધે જે ફોર્સ લાગે એ કયું ફોર્સ? વેટ. વેટ. વેટ અને કોનાથી બેલેન્સ કરો Normal. તું? Normal. नॉर्मल So, फोर्स. जिसका मास ज्यादा होगा उसका नॉर्मल ज्यादा होगा, नॉर्मल ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा हो गया. मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसका नॉर्मल के साथ प्रोपोर्शनलिटी क्या आया? Proportional to n. ડાયરેક્ટ हाँ, तो वही नेक्स्ट पॉइंट में समझा रहे. देखो कि the FS maximum limiting frictional forces depends on normal force and by what proportionality? डायरेक्टली प्रोपोर्शन से डिपेंड करता है. अभी मैथमेटिक्स में तो हम ऐसा सीखते हैं कि if there is a proportionality sign which is to be removed then we should have to put a constant. So if we write down the above equation, rewriting it with equality sign, then this equation becomes Fs maximum mu s. अरे ये mu s का तो जानकारी है अपने पास. mu s को क्या बोलते हैं? Coefficient of Coefficient of static frictional force. हाँ, तो देखो और mu s को सब्जेक्ट बनाओगे तो वही मिल जाएगा आपको. The ratio of maximum static frictional force to the normal. पढ़े છે ખબર? Yes, Sir, sir. yes. सर यस. સર ओके. हाँ सर बोलो भाई. સર બોલો. અગર જો નોર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમનો સ્ટેટ હોય અને નોર્મલ ડબલ્યુ થી એટલે એમજી થી ઇક્વલ થઈ જાય તો એમજી એટલે ડબલ્યુ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે ને પેલો જે આ જે ફ્રિક્શન છે મતલબ એફએસ મેક્સ છે We are talking about which frictional force? સ્ટેટિક. એ ત્યારે લાગે જ્યારે મતલબ ઓબ્જેક્ટ રેસ્ટ પર હોય. તો પછી તો રેસ્ટ પર જ રહેવાનું છે ને, તો W વધી જશે ને N ઓછું થઈ જશે ને ક્વેશ્ચન ક્યાંથી આવે? એફએસ એ પ્રપોર્શનેટ ડબલ્યુ થી થઈ જશે ને તો પછી એનાથી પણ Hala, Fs max is directly proportional to normal in the case of a horizontal surface.
जनरल कोई भी केस में एफएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल. हर एक केस में એવું ના હોય કે નોર્મલ અને વેટ સેમ હોય. કોઈ વાર નોર્મલ mg sin θ થી બી બેલેન્સ થશે. મેં પહેલા બી કીધું તમને cos θ થી બી બેલેન્સ થાય, પણ બધામાં માસ આવે. સો ધેટ મીન્સ fs max is directly proportional to normal. વેટ ના લખાય ત્યાં. હા. Okay. ચલો yes. So that what it is written, the fs max is directly proportional to normal, and hence the fs max can be written as mu sn, and that constant of proportionality is called coefficient of static friction. You getting my point? Yes, sir. Yes, sir. સર યસ. બે સ્ટુડન્ટ yes. હોય આપણે સ્ટેટિક ફ્રિક્શન ની વાત ભૂલી જઈએ. बराबर. दोनों स्टूडेंट है, एक हट्टा कट्टा है और एक थोड़ा पतला सा है. दोनों को हम गार्डन में भेजते हैं, स्लाइड करने जाओ. बराबर. तो कौन से स्टूडेंट को ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा? कट्टा कट्टा. જાડીએ તો Both have the same ગાડીએ કોઈ friction. એવું ના બોલાયેલા. જાડી આપણે इंग्लिश मीडियम में गट्टे थे, गट्टे को. हट्टे कट्टे वाले स्टूडेंट को ज्यादा फोर्स लगेगा. द रीजन इज दैट क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो नॉर्मल ज्यादा होगा. વેલોસિટી વધી જાય. वेलोसिटी પછી હજી તો આપણે ફ્રિક્શન ની જ વાત કરી છે. यस. फिफ्थ पॉइंट रीड करने का वॉलंटियर कौन था? सर मैं. यस बोलो अंश भाई. Mu s is the coefficient of static friction that depends only on the nature of surfaces in contact. Most IMP can be asked you in 1 mark objective, 1 mark MCQ. तो mu s जिसका नाम है coefficient of static friction, ये कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? It only depends on the nature of surface in contact. Are you clear with this? Yes, sir. સર યસ. आप एज ना 5 Sir, पॉइंट्स के yes. બધા જ क्लियर? સર યસ. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो देन देखो, there are some points given on this page. हाँ, the 6, 7, 8, 9, 10, 11 જેટલા થાય એટલા કરીએ, બાકીનો તમે રીડ કરજો, ના ખબર પડે તો પૂછવાનું. चलो ये पेज पे पहले तो ऊपर दिया है कि जो एफएस का वैल्यू होता है स्टैटिक फोर्स का, वो एफएस मैक्सिमम से कम होता है. तो ये तो बट ऑब्वियस है. एक तो आपको एफएस मैक्सिमम का फॉर्मूला याद रखो. इट इज SN. म्यू एस एन. एफएस मैक्सिमम कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है. तो ये तो बट ऑब्वियस है ना कि एफएस का वैल्यू आइदर एफएस मैक्सिमम से छोटा होगा या इससे इक्वल हो सकता है. एफएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन एफएस मैक्सिमम, सो दैट द एफएस इज लेस देन और इक्वल टू एफएस मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस एन. तो एफएस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, ऐसा समझा रहे. चलो यस. देन 6 पॉइंट will be that volunteer 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 volunteers, 6 points. फटाफट. ओम अंश हमें 4 રીડ કરો પછી નવા 2 આવી જશે. यस तनिषा. रीड 6 पॉइंट થી રીડ કરો. કોણ રીડ કરે છે ભાઈ? સર તમે સર મેં કરું. તું પછી કરજે. હા સર. यस तनिषा you can read it. हाँ sir. When an object starts moving due to applied force, the frictional force decreases from its limiting value, is called kinetic friction, sliding friction, or dynamic friction. ये बड़ा ऑब्वियस में आ जाता है. तब उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है. चलो यस ओम भाई. Kinetic friction does not depend on area of contact. Kinetic friction is nearly independent of velocity. Kinetic friction depends on only on normal. Fk is directly proportional to normal. Fk is equal to mu k n, where mu k is coefficient of kinetic friction that depends on nature of surfaces in contact.
जो સિમિલર છે મ્યુએસ જેવું છે મ્યુએસ અને એફએસ જેવું એફએસ में भी हमने ऐसा बोला था कि एफएस मैग्नेटिक फ्रिक्शन आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट फिर हमने ऐसा देखा था कि एफएस मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स तो यहाँ पे भी है काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स बस यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ऐड होगा कि अभी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना वो वेलोसिटी से भी इंडिपेंडेंट होता है तो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट बट ओनली डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स बराबर तो जैसे आपने पहले प्रोपोर्शनलिटी एफएस मैक्स का लिखा था अभी एफके का हो जाएगा कि एफके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल so if you remove the proportionality sign the fk becomes mu kn जैसे आगे म्यू एस था दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था यहाँ पे म्यू के होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड सेम जैसे म्यू एस मैक्स म्यू एस का वैल्यू सरफेस जो कांटेक्ट में है उस पे डिपेंड करता था नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता था वैसे ही म्यू के का वैल्यू भी नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा બધું જ સેમ છે ખાલી વેલોસિટી વાળો પોઈન્ટ એડ થઈ ગયો છે બાકી એફએસ ની જગ્યાએ એફકે આવી ગયું છે म्यू एस ની જગ્યાએ म्यू के આવી ગયું છે આર યુ ગેટિંગ વિથ ધીસ વેલોસિટી તો એકવાર એક્ઝામ્પલ થી સમજાવો ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन सपोज उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है ત્યારે જેટલું કાઇનેટિક ફ્રિક્શન ફોર્સ લાગતું હોય अभी आप ये वेलोसिटी का वैल्यू 15 में से 20 कर दो या 50 में से 5 कर दो तो भी वो काइनेटिक फ्रिक्शन तो जितना है उतना ही रहेगा वेलोसिटी के वैल्यू पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है ऐसा समझा रहा है तो सर आने आ प्रॉपर्टी છે मतलब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ની એની પ્રોપર્ટી હા સર સર આપણે સરફેસ એરિયા વધે તો વેલ્યુ આપણે સ્કૂટર લઈને જતા હોય રસ્તા ઉપર બરાબર અને આપણા સ્કૂટરની સ્પીડ 25 હોય કે 30 હોય 15 હોય કે જે બી હોય તો જે રસ્તો છે રોડ છે એ તમારા સ્કૂટર ઉપર જે ફ્રિક્શન લગાવે એમાં ચેન્જ થાય કે ના થાય એ જે કાઇનેટિક ફ્રિક્શન લગાવે એના ઉપર ચેન્જ થાય ના થાય એ તો જેટલું ફ્રિક્શન લગાવવાનું છે એટલું જ લગાવશે હા પછી તમારા સ્કૂટરમાં ટાયર અલગ અલગ કરો એ બધું વસ્તુ અલગ છે ગેટિંગ માય પોઈન્ટ Yes, sir. Okay. चलो then proceeding with the next one 6 થઈ ગયો 7 થઈ ગયો when relative motion has begun the acceleration of the body according to Newton's second law of motion is F minus Fk जो बॉडी का मोशन एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पे मैंने ऑब्जेक्ट एम जिसका मास एम है वो रखा है ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो ये डायरेक्शन में इसका मोशन एक्सेलरेशन ए से हो रहा है तो ये फोर्स का वैल्यू क्या हो गया बराबर से कौन से खबर यस सर आ डायरेक्शन में हमें फोर्स एफ लगा हुआ है मैं छोड़ दो चलो अगर ये रफ सरफेस है ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इस पे जो दूसरा फोर्स लगेगा ना काइनेटिक થઈ જાય મોશન માં ઓપોઝિટ તો સ્ટેટિક માં લાગે એ તો ઓબ્જેક્ટ સ્ટેશનરી હોય ત્યારે ભાઈ यार तो ऑब्जेक्ट मोशन में છે बराबर तो मेरे को बताओ कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसमें से अपोज कितना हो गया Fk अपोज कितना हो गया एफ के F तो नेट minus फोर्स Fk कितना हुआ एफ माइनस एफ के અને બાકી जो बचा वो आपको बॉडी को एक्सेलरेशन देगा ए मतलब હું તમને एग्जांपल देने समझाऊं इफ यू अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स मतलब f ની વેલ્યू 10 થઈ ગઈ काइनेटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन નું લાગે છે तो 10 तो निकली गई तो 10 में से 2 गया बाकी कितना बचा 8 न्यूटन वो 8 न्यूटन से बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगा और वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप कैसे फाइंड कर सकते हो अप्लाइड फोर्स F मतलब by 10 M. न्यूटन माइनस जो फ्रिक्शन लगा उसको माइनस कर दो અને પછી એને માસ થી ડિવાइड करो એટલે તમને एक्सेलरेशन મળે आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट ये आपको यहाँ पे समझा रहे हैं सर यस
અને ઇન કેસ અગર એક્સેલરેશન 0 है, એક્સેલરેશન થતું જ નથી, તો એનો મીનિંગ શું થાય? F F is equal to FK. यस, F इज FK हो जाएगा. मैथमेटिकली भी समझ सकते हो आप, ओरली भी समझ सकते हो कि જ્યારે F અને FK ની વેલ્યુ ઇક્વલ થઈ જાય એટલે બોડીને એક્સેલરેશન ના મળે. આર યુ ક્લિયર વિથ ધીસ? સર Yes. બોલ ભાઈ. સર જો FK વધી જાય એટલે વધારે હોય F કરતા, તો પછી એક્સેલરેશન નેગેટિવ થઈ જાય. FK FK કોઈ વધારે દિવસ હોય. એવું એક્ઝામ્પલ કોઈ દિવસ એવું એક્ઝામ્પલ જોયું છે કે બોડીને સરફેસ ઉપર રોલ કરાવતા હોય કે મૂવ કરાવતા હોય, કરાવે છે એક ડાયરેક્શનમાં, પણ ફ્રિક્શનના લીધે જોયું છે भी देखा है इसमें ऐसा एग्जांपल. तो फोर्स तो मोशन तो एक डायरेक्शन में करवाना है, लेकिन वो फ्रिक्शन उसको होता है कि फ्रिक्शन की वजह से कोई मोशन नहीं हो सकता. पॉइंट तक हमारा हो गया. ये नहीं, सॉरी 9 સુધી થયું. 10th અને 11th બે બાકી રહ્યા, પણ ટાઈમ થઈ ગયો છે. so we'll take 10th and 11th next time. તમે રીડ કરજો, खबर पड़े तो ठीक है, ना खबर पड़े तो आपने तो एक्सप्लेन करवाना है. और आज जितना करवाया है वो सब लिखा हुआ होना चाहिए. तो नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट विद दिस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन. એવું હોરિઝોન્ટલ સરફેસ પર સમજાય છે ને, એવું આના પર સમજાય છે. સર યસ. હા સર. So then good day. Good day, sir. Bye, Good day, sir. Bye. Bye, sir. Okay.